आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स का अप्रैल में एग्जामिनेशन 2018 का पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 1. Here is our question number 1, that is from our chapter number 1, Physical Quantities and Measurement. Which of the following is a dry physical quantity? We have to identify among those four quantities that which is the drive quantity. So as we have learned that we have two type of quantities, base quantities and drive quantities. In base quantities, we have only seven base quantities, while the drive quantities are more than seven quantities. So in these four options, we have three base quantities and one drive quantities. So the among those seven quantities, the three base quantities are given: length, mass, and time. These all are the base quantities, while this volume is our drive quantity. So we have to identify the drive quantity in this question. So the correct option for this question is option D, that is volume. Let's come to question number 2. This is also from our chapter number 2, chapter number 1, physical quantities and measurement. The prefix used for the multiple value of 10 raised to the power minus 9. So we have studies number of prefixes and their multiple values in terms of powers of 10. So the 10 raised to the power minus 9 prefix or factor, the prefix of this factor is nano. Option C is the correct answer for this question. So quickly, let's move to our question number 3. In question number 3, we have an expression in which we have to identify the number of significant figures. So the expression is 0.20180. So we have studies total of 5 rules to describe the number of significant figures in any measurement. और उस फर्स्ट रूल के अंदर हमने पढ़ा था that all the non-zero digits are significant. So this 2, 1 and 8 is already significant. This zero lies between two significant figures. It means this zero is significant. And this zero is the ending zero of a decimal number. It means this zero is also significant. Finally, starting these zeros, two zeros are non-significant because these zeros are the starting zeros of our decimal number. So these zeros are non-significant. So overall, we have 5 significant figures in this expression. So the correct option is option B. And this question is also from our chapter number 1, Physical Quantities and Measurement. So let's come to question number 4. This question number 4 is our from chapter 2, Kinematics. The type of motion we have to identify in an example, that is simple pendulum. Simple pendulum हमने जो है वो study किया था that the type of motion in a simple pendulum, ये pendulum इस तरह से move करेगा इस position तक, then it will come back to its previous position. So the type of motion in the simple pendulum, as we have studied, is the vibratory motion. So the correct option for this question number 4 is option D. Let's move to another question, question number 5. Which of the following is a vector quantity? So this question is from chapter number 2, and the topic is scalars and vectors. So as we know that the quantities that require magnitude as well as direction for its representation, those quantities that can be described by using their magnitudes and the directions are known as vector quantity. So this mass, time and distance, these all are scalar quantities, while this velocity is a vector quantity. Velocity जो है वो एक vector quantity है because it has a specific direction. So the correct option for this question is option D. Let's come to question number 6. And in question number 6, this is again from chapter number 2.
and the topic is free fall motion. So a ball is dropped from the top of the building and it takes 4 seconds to reach the ground, and we have to calculate the height of the building. If a ball is dropped, it's mean its initial velocity is 0 and it takes 4 seconds to reach the ground. And we have given the gravitational acceleration as 10 meters per second square, and we have to find the height of that building. So by applying the second equation of motion of हम apply करते हैं, so that second equation of free fall motion states that height is equals to VIT plus GT square over 2. By substituting the values, initial velocity 0 time 4 plus gravity 10 time 4 square divided by 2. सो अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास हाइट इक्वल हो जाएगी 80 मीटर्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, सो फाइनली वी विल गेट द आंसर 80 मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी, 80 meters. Okay, so let's move to another question, that is question number 7. Question number 7 को देखते हैं. Okay, so this question is from our chapter number 3. Okay, chapter number 2 we have, and the topic is vector addition or simple head to tail rule. सो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक सवाल मौजूद है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी. इसको अगर हम वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड करें सो वी शुड गेट द रिजल्टेंट वेक्टर एज सी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. सो लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए, और अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ऑफ हेड टू टेल रूल हम नेक्स्ट वेक्टर हमेशा फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ बनाते हैं. सो दिस इज आर वेक्टर बी. अब इन दोनों को अगर हम सम करें a प्लस बी, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें सो वी शुड गेट द रिजल्टेंट वेक्टर. और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा ड्रॉ होता है फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. सो यहाँ अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ किए हुए, जबकि वेक्टर सी जो है वो रॉन्ग ड्रॉ किया है, बिकॉज वेक्टर सी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर. सो इट शुड बी फ्रॉम द tail of the first vector to the head of the last vector. So this option is incorrect. सो ऑप्शन बी में अगर हम देखें ए और बी दोनों के हेड मीट करें, जबकि ए और बी के हेड मीट नहीं करने चाहिए, ए का हेड और बी की टेल मीट करनी चाहिए. Similarly, this question is option is incorrect and this option is also incorrect. So the correct representation of this addition of A and B represented by the resultant vector C. So the correct option we have is option D. So let's move to the other question, that is question number 8. So in question number 8, we have the uh, question from our chapter number 3. And our chapter number 3 is dynamics. And the topic included in this question is centripetal force. So in this question, we have a bucket full of water that is drilled in a circular path connected with this string. So we know that a force in this string is the tension force, and this tension force act as the centripetal force that moves that bucket in a circular path. So we have to tell about the water placed inside the bucket, that what happens to the water that is placed inside that bucket. So according to the third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So there is a force that moves that body in a circular path is a centripetal force that is directed toward the center of the circular path. Another force that is opposite to the direction of centripetal force, and this force is known as centrifugal force. So this centrifugal force acts on that water
और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर और अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ. तो इस बकेट के अंदर जो वाटर मौजूद है वो बकेट के अंदर वाटर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी जो कि इस बॉडी को या इस वाटर को इस सर्कुलर पाथ में ही मूव करवाएगी. बकेट में से वाटर फॉल नहीं करेगा. इट विल रिमेन fully inside the bucket. So the correct option for this question is option B. So let's come to question number 9, that is from our chapter number 4. And our chapter number 4 is turning effect of force. And we have to define the turning effect of force. If a body turns about a fixed axis or the axis of rotation, so this quantity or this physical quantity is termed as torque. जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें and we have the turning effect or rotation on the body, so this effect is known as torque. So the correct option for question number 9 we have is option A. Let's move to another question, that is question number 10. And this question number 10 is again from our chapter number 3. So chapter number 3 से related again question है, and again we have the topic that is chapter number 3 and the topic is centripetal force. So जैसे कि हमने पढ़ा था कि if a body is moving in the circular path में मूव करते हुए अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है इन दैट डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, अगर हम इस बॉडी के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है अगर हम इस फोर्स को रिमूव करते हैं, सो दिस बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन. This direction is known as tangent to the circular path, and actually this direction is of the velocity. The direction of centripetal force is towards the center, while the direction of velocity in a circular path is tangent to the circular path. So let's say this body is at that position at some instant of time, and if we cut this centripetal force at this instant, this body will move again टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. सिमिलरली अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कट ऑफ कर देते हैं तो हमेशा ये बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाथ इज टेंजेंट to the circular path. So the correct option we have is option A, that is the tangent to the circular path. So let's come to question number 11, and in question 11 this is our chapter number 4, turning effect of force. In this question we have to define or identify the state of the equilibrium if a body is disturbed and it does not returns to its original position. जब भी किसी बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज नॉट स्टेबल. और अगर बॉडी एक बिल्कुल ही न्यू पोजीशन में आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्टिकली बॉडी इस तरह से बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं सो दिस बॉडी विल कम्स टू डिफरेंट पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड वी हैव दिस unstable equilibrium in option B, that is 3 only. So the correct option for this question is option B. Let's come to question number 12. Question number 12 को देखते हैं. While digging a miner moves 25 kilometers deep inside the coal. Compared to his actual weight on the surface of the earth, the weight inside the coal mine of that miner will be. So let's say we have this earth and the body is lying on the surface of the earth. सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमारे पास जो वेट का जनरल जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू mg वेयर मास इज कांस्टेंट. सो दिस
weight only depends on the gravitational acceleration. Greater the gravitational acceleration, greater will be the mass of that body. So if we move upward from the surface of the earth, the value of g decreases. ऊपर जाते हुए altitude के साथ gravitational acceleration decrease हो जाती है. while अगर हम किसी बॉडी को inside the earth surface depth में लेकर चले जाएं, depth में move करवाएं बॉडी को, so ये बॉडी का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अगेन डिक्रीज होती है. सो एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जब बॉडी अपवर्ड मूव करे या बॉडी डाउनवर्ड मूव करे डेप्थ में, सो इन दोज केसेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. तो जब वे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो साइमल्टेनियसली द वेट ऑफ द बॉडी आल्सो डिक्रीजेस. सो अर्थ के ऊपर जो उस माइनर का वेट था, माइन के अंदर जाने के बाद वेट उसका डिक्रीज हो जाएगा. एंड द रीजन बिहाइंड दैट gravitational acceleration decreases while the miner moves deep inside the earth. So this question is from our chapter number 5, gravitation. Let's move to question number 13, that is also from our chapter number 5, gravitation, and the same topic is asked in this question. The value of acceleration due to gravity varies with, so we have discussed two factors that affects the value of gravitational acceleration. So this gravitational acceleration depends on the altitude and depends on the depth from the surface. Or in short, this gravitational acceleration depends on the distance of the body from the center of the earth. अर्थ के साथ जो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन depends or varies with the distance from the center of the earth. Let's move to other question, that is question number 14. And this question number 14 is again from chapter number 5, gravitation. All of the planets revolve around the sun due to the presence of a force, a certain force that acts between the planets and the sun, due to which all the planets revolve around the sun in a circular path. So as we know that to move in a circular path, a body needs a force. That force is known as centripetal force. So in the case of this planetary motion, the centripetal force is provided by the by the this centripetal force between the planets and the sun is provided by the gravitational force that exists between the planets and the sun. So the correct option for this question is option D, gravitational attraction between the planets and the sun. So this is the same force that exists between Earth and Moon and the satellites and the Earth, that all moves in a circular path around the Earth. So let's move to another question. We have question number 15, that is from our chapter number 6, work, power, and energy. So in this question, we have a force, we have a body on which we have applied a force of 20 Newton, due to which the body moves from position X to position Y. And the distance displacement covered by the body is 100 meter. And what we have to do is to calculate the work done by this applied force. So we know that work done is equals to force multiplied by displacement. We are given with the force as 20 newtons and displacement 100 newton. So after multiplication, we will get 20,000 joules of energy. So the correct option is option D. So we have another question, question number 16. It is again from our chapter number 6, work, power, and energy. A metallic ball is dropped from a certain height as shown in the diagram. So neglecting the air resistance, we have to tell about the total energy of the ball. So as we know that total energy of the body is equal to kinetic energy and potential energy.
And we know the law of conservation of energy that states that the total energy of a system or a body always remains constant. Body की जो total energy है वो हमेशा constant रहती है. So at point A, body has the maximum potential energy while its velocity is zero, so the kinetic energy is zero. We know that kinetic energy is equals to mv square over 2, while potential energy is equals to mgh. So at point 1 or position 1, potential energy is maximum and kinetic energy is zero. When we drop this ball, height will decrease and velocity of that ball will increase. This means that potential energy of the body decreases while the kinetic energy of the body increases. At position 4, the height of the body is approximately zero, the potential energy of the body is zero, and kinetic energy will become maximum. So, for moving from position 1 to position 4, the body is losing its potential energy, and the loss in that potential energy is converted into the kinetic energy of that body. This shows that the total energy of the body will always be equal at every position. इस बॉल की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So the correct option for this question is option D, that the total energy will remain same at all the positions. So next question we have is question number 17. In question number 17, we have to describe the energy conversion that is taking place in a fossil fuel power station. We know that when a fossil fuel power station, we burn a coal or some other type of fossil and we get the heat from that burning process. This heat is moved to the boiler where water is boiled, and the steam of that water is passed to the turbine to rotate this for rotation, and due to that rotation this kinetic energy of the turbine is converted into the electrical energy. So the energy conversion is from heat energy that is in the burner or burning process, kinetic energy that is in the turbine, and the output of that turbine is our electrical energy. So the correct option for this question number 17 is option C, and this is from our chapter number 6, work, power, and energy. So quickly, let's move to our question number 18. So in question number 18, we have a question from chapter number 7, physical properties of matter. We have three different balls of the same diameter. इन तीनों balls का जो diameter है वो same है. जब same diameter है, so we can conclude that all the ball have the same volume. तीनों balls का जो volume है वो बिल्कुल बराबर होगा. Which of the following is true about the upthrust exerted on the ball? So, according to Archimedes' principle, whenever a body is completely or partially immersed in a liquid, so that body displaces the liquid. वो body जो है वो हमेशा liquid को displace कर देती है. Water or liquid will be displaced. अब वाटर जो डिस्प्लेस होता है तो वो अमाउंट ऑफ वाटर या उस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगती है, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो एज वी नो दैट तीनों बॉडीज का जो वॉल्यूम है वो सेम है, सो दे हैव डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, and the weight of the water that is acting on that body due to the displacement of water, तीनों के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल. ये वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि वाटर अप्लाई कर रहा है इन तीनों बॉडीज के ऊपर. सो ये तीन फोर्स तो बेसिकली सेम है. अब अगर हम इन तीनों बॉडीज के वेट की बात करें तो इन तीनों बॉडीज का जो वेट है वो डिफरेंट होगा, जिसमें आयरन का वेट जो है वो सबसे ज्यादा, लेड का वेट उससे कम, और सबसे कम वेट जो है वो कॉर्क का होगा. सो अगर हम इस बॉडीज के ऊपर नेट फोर्स देखें, सो नेट फोर्स ऑब्वियसली कम होगी इस लेड बॉल के ऊपर, जबकि सबसे ज्यादा होगी इस कॉर्क के ऊपर. सो लेट से हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन का वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो इन तीनों बॉडीज के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और तीनों बॉडीज का जो वेट है वो डिफरेंट होगा. सो लेट सपोज सबसे ज्यादा वेट आयरन का 10 न्यूटन,
यहाँ इसका 7 न्यूटन और इसका वेट है 3 न्यूटन। सो सबसे ज्यादा जो फोर्स अप्लाई होगी इन बॉडीज के ऊपर दैट विल बी ऑन द कॉर्क। जो नेट फोर्स लगेगी बॉडी के ऊपर वो कॉर्क वाली बॉल के ऊपर सबसे ज्यादा होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन सी दैट कॉर्क बॉल विल हैव द मैक्सिमम अपथ्रस्ट। So let's come to question number 19. And in question number 19, we have a question from chapter number 7, Physical Properties of Matter. So, in this question, according to kinetic theory of matter, particles move randomly with high velocities. So, in the first topic or the first SLO, we have studied different properties of matter, जिसमें हमने kinetic molecular model के according solid, liquid और gases की properties को describe किया था, in which the particles that are moving randomly and with very high velocities, the state of matter that is known as gases. गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। Let's come to question number 20, and this question is from our chapter number 7, Physical Properties of Matter. A force acting on a unit area. अब हमारे यहाँ हमारे पास फोर्स की बात करें, a force that is deforming force, and this force is acting on a unit area, and this force is a deforming force because we are given with the object that are causing change in shape and size. So this force acting on a unit area, and this force is known as deforming force. So this ratio of force and unit area is known as stress. इसे हम जो है वो स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास चेंज कुड बी इन द शेप कुड बी चेंज कुड बी इन द साइज और वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से साइज में चेंज आ जाता है, सो दिस स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वाइल वॉल्यूम में अगर चेंज आता है, सो दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। So clearly we have option A, that is the correct answer for this question number 20, that force acting on a unit area is equal to, sorry, stress. So correct option we have is option B, stress. Next, we have the question number 21, that is from chapter number 8, Thermal Properties of Matter. In this question, we have to give a reason why mercury is commonly used in a liquid in glass thermometer. So, we have studied a topic in which we have studied the basic thermometric properties. So, we have 7 बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, और इन तमाम प्रॉपर्टीज में कुछ इस तरह से होता है कि जो भी मटेरियल हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के अंदर यूज करते हैं, इट शुड हैव दोज 7 क्वांटिटी। सो मरकरी हमने देखा है कि कॉमनली यूज होता है। सो उसका जो मेन रीजन है, या उन 7 जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, उनमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन है, दैट it should have uniform thermal expansion. It should be easily available. ये property नहीं होती. It is silver in appearance. It has very high freezing point. So ये तमाम options wrong है. So we have a correct option, that is option number D. Okay, so next we have is question number 22 and 23. So this question number 22 is from our chapter number 8, Thermal Properties of Matter. And if the temperature of this substance is 20 degrees centigrade, तो हमारे पास temperature given है, and we have to find this temperature in Kelvin scale. So we know that the conversion factor between Kelvin and the degree Celsius is C plus 273. So to calculate this temperature in Kelvin, हम C की value को replace कर देंगे 20 plus 273. So we will get the correct answer, that is 293 Kelvin. So 20 degrees centigrade temperature and 293 Kelvin temperature, they both are equal. So the correct option we have is option D.
Okay, then we have question number 23, that is from the same chapter, chapter number 8, thermal properties of matter. So, when a small piece of red hot iron is dropped into the vessel of boiling water, so what will happen to the temperature of the water? अगर हम एक red piece of hot iron को, let's suppose we have this iron ball, और इस आयरन बॉल को हमने हीट कर लिया एट वेरी हाई टेम्परेचर, और और यहाँ हमारे पास जो है वो बॉइलिंग वाटर मौजूद है. एंड वी नो दैट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज ऑलवेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर कैन नॉट बी बॉइल्ड बिलो 100 और अबव 100. बिलो 100 डिग्री इज इट लिक्विड स्टेट एंड अबव 100 इज इट्स गैसियस स्टेट. सो जब हम इस हॉट आयरन को पुट कर देंगे इस वाटर के अंदर, सो वाटर के टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? सो एज वी नो दैट एट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर देयर इज अ प्रोसेस दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट. बॉडी की या वाटर की जो है वो स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर. सो एज वी हैव स्टडीड दैट जब भी किसी बॉडी के अंदर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा हो या बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा हो, चेंज ऑफ स्टेट के दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन सी, कि जब हम इस रेड हॉट आयरन को पुट कर देंगे बॉइलिंग वाटर के अंदर तो वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर यहाँ पर सिर्फ हमें पूछते कि रेड हॉट आयरन को वाटर के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, सो वहां वाटर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा बिकॉज इट वाज नॉट द बॉइलिंग वाटर. इफ इट इज अ बॉइलिंग वाटर देन टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट जब हम उसके अंदर रेड हॉट पीस ऑफ आयरन को पुट कर देते हैं. So next we have last two questions, that are question number 24 and 25. These two questions are from our chapter number 9, thermal mode of transfer of heat. So an example of a good conductor. So we have to identify the good thermal conductor among those. So we have a glass door, frying pan, wooden door, and leather jacket. So this leather jacket is used to reduce the rate of transfer of heat. Wood is an insulator. Similarly, glass is an insulator. The frying pan we use for the cooking. So in that cooking purpose, we need a good thermal conductor so we can cook the food evenly and in less amount of time. So the correct option we have is option B, that is frying pan is a good thermal conductor. Next, we have question number 25 from our chapter 9, mode of transfer of heat, and the ventilators in a room works on the principle of. So we have seen the ventilators that are installed or placed in the wall and the uh, ऑन दी वॉल एट द टॉप ऑफ दी वॉल, जिसका काम ये होता है कि वो इस रूम को जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर रखता है. सर्दियों के अंदर जो है वो हम उस रूम को हॉट रख सकते हैं, और विंटर्स के अंदर जो है उसको हॉट रख लें, और समर्स के अंदर जो है वो हम उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर सकें. सो इस वेंटिलेटर का पर्पस ये होता है कि वो हॉट एयर को जो है वो रिमूव करता है और कोल्ड एयर को पास कर देता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, जिसमें हॉट एयर और कोल्ड एयर मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो ये जो प्रोसेस है हीट के ट्रांसफर का, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन. So the correct option for this question number 25 is option B, convection.